अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेस शोइंग का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने कल इस ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा कि जो फेस शोइंग है ये क्या होता है। आज हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 92 निकालिए। For 3 to 4 days, the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. One day, the washerwoman aunt brought her daughter in law along with her to fetch water. The daughter in law had a veil over her face right down the throat. The pitcher rested on her head and the brand new pitcher on it. अब कहता है 2-3 दिन तक इस बहू के साथ बहुत इसको पैम्पर किया गया, प्यार किया गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद इसको जो घर के काम थे उनमें मशगूल कराया गया। और जो ये वॉशर वामन आंटी थी, इसने अपनी बहू को पानी लेने लाया। और जो उसकी बहू थी, यानी कि वो जो नई ब्राइड आई थी, उसके चेहरे पे वेल था, उसके चेहरे पे पर्दा था और उसके सर पे एक मटका था जिसमें उसको पानी लेना था। The well was near our house. People from far and near came there to fill their vessels. Before going to the well, the two women came to our house, and mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt, and my sister-in-law. All the three ladies of our house blessed her. May you and your husband live a ripe old age. But after they left, they raised another ripple in our house. अब कहता है कि चूँकि जो वेल था वो हमारे घर के नज़दीक था, ये जो आंटी है इसने अपनी बहू को हमारे यहाँ लाया और उसने अपनी बहू को बोला कि तुम जो है तुम इनके पैर छू लो। किसके पैर छू लो? लिखने वाले की माँ के, उसकी आंटी के और उसकी सिस्टर इन लॉ के। और ये जो ये लेडीज़ थी, इन्होंने उनको बहुत दुआएं दी और कहा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ हमेशा के लिए बुढ़ापे तक खुश रहो। लेकिन जब वो निकले तो हमारे घर में फिर से बहस स्टार्ट हो गई। And the bride has such a lovely get, like that of peacock dancing. Mother and aunt were well-meaning women who appreciated others and also condemned when condemnation was called for. But my sister-in-law was young and did not like another being praised. अब कहता है कि जो ब्राइड थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी। ब्राइड में एक चलन अच्छा था, इसके चाल चलन अच्छे थे। जैसे पीकॉक डांस करता है वैसे ही ये ब्राइड जो है चल रही थी। मदर और आंट जो है आपस में बात कर रहे थे और वो अप्रिशिएट करते थे जब भी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना होता होगा, और वो कंडम करते थे, यानी कि वो भी मतलब ये करते थे। लेकिन जहाँ पे उनको अच्छा बोलना होता था किसी के बारे में वो बोल देते थे। लेकिन जो ये कहता है कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, मेरी जो भाभी थी, वो उसको अच्छा नहीं लगता था कि किसी इंसान की तारीफ़ की जाए। उसने कहा कि पीकॉक्स जो है वो डार्क होते हैं, लेकिन जो ये ब्राइड है ये फेयर है। इसको ये वैसे ही चल रही थी जैसे स्वान चलता है, यानी कि बत्तख का एक दूसरा किस्म होता है, जो एक वाटर एनिमल बर्ड होता है। तो ये कहते हैं ये स्वान के जैसे डांस कर रही थी। कट टू द क्विक, द आंट सेड व्हाट डू वी लूज इफ वी कॉल अ पीकॉक वाइट। उसको कहता है अब चुप हो जाओ, अगर हम पीकॉक को वाइट बोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। द सिस्टर इन लॉ kept quiet. Either she could not give a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. The following day, the two women came to our house again on their way to the well and sat down for a little chat. The woman of our house inquired from daughter-in-law about the location of house in Surinsar. अब कहता है कि जो भाभी है उसने उसको फिर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद या तो उसके पास कोई जवाब था नहीं या तो वो इस पे ज़्यादा बहस करना नहीं चाहती थी। तो दूसरे दिन क्या हो गया कि ये फिर से पानी लेने वेल पे आ गई और हमारे घर की औरतें इसके साथ बात करने बैठी और उन्होंने इसको पूछा कि आपका जो मायका है आपका वो कहाँ पे है, सुरनसर में आपका घर कहाँ पे है। The mother-in-law advised her, you see, the younger aunt is called Chachi and the elder aunt is called Tai. My sons address them like that. You also should do like that likewise. And this is Babi, my elder son wife. Her husband and Gulabdin went to school together. I called her by her first name, but you should always address her Babi. अब कहता है जब नेक्स्ट डे इसकी सासू माँ इसके साथ आई फिर से पानी लेने, तो इसने इसको बोला कि जो छोटी वाली ये आंट है तुम्हारी, इसको तुम चाची बोल सकते हो, और जो बड़ी वाली है इसको तुम ताई बोलना, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़ी वाली को ताई और छोटे वाली को चाची कहते हैं। और जो इनकी बहू है, यानी कि लिखने वाले की जो भाई की वाइफ है, जो मतलब जिसको हज़म नहीं होती थी किसी की तारीफ़, तो तुम इसको भाभी बोलना।
After a few days, the mother-in-law stopped coming with her daughter-in-law. Probably she was engaged in other domestic chores at home. Rahim Bibi came to the well twice in the morning and once in the evening. Going to school in the morning, we would see her on the way. One day, while the other boys had gone ahead, I remained behind. When I saw her coming from the opposite direction, she had her face covered as usual, right down to the throat. A little hesitantly, I said, Rahim Bibi, you can show your face to me. I am so small. अब कहता है कुछ दिनों के बाद इसकी सासू माँ इसके साथ नहीं आ रही थी. अब ये अकेली आती थी पानी लेने के लिए, और सुबह एक बार दो बार आती थी और शाम को एक बार आती थी पानी लेने के लिए. और उस टाइम हम स्कूल निकल रहे होते थे. दो जो मेरे साथ लड़के चल रहे थे वो थोड़ा मुझसे आगे चले गए. मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और मैंने इसको पूछा कि मुझे आपका अपना चेहरा दिखाओ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ. Rahim Bibi kept walking and said, Bauji, if you want to see my face, you will have to give Mashahni. We were walking in different directions, and before I could give any reply, she had gone some distance. अब रहीम बीबी ये कहता है कि जो बहू थी, ये जो ब्राइड थी, ये चल रही थी और मैंने इसको बोला, इसने मुझे कहा तुम मेरा फेस तब भी देख सकते हो जब तुम मुझे मुंह दिखाई दोगे. اور میں اس کے ساتھ جواب دینے ہی والا تھا کہ یہ چلی گئی وہاں سے. The next day I managed to remain behind again. As I crossed her path, I said, Rahim Bibi, what would you like to have as mashahni? I shall get it for you from mother. Rahim Bibi replied, no, from Chachi. I shall show you my face only when you give mashahni out of your own earning. Until then, I will not lift my veil. اب کہتا ہے میں نے اس کو نیکسٹ ڈے بولا کہ آپ کو کیا چاہیے منہ دکھائی میں اپنی ماں سے لوں گا اور میں آپ کو دے دوں گا. لیکن رحیم بیوی نے کہا نہیں تمہیں چاچی سے نہیں لینا ہے. جب تم خود کچھ کماؤ گے پھر تم مجھے اپنی ارننگ میں سے دو گے اور تب ہی میں اپنا ویل اٹھاؤں گی. رحیم بیوی stuck to what she said for years. She kept the veil. In the next 3 years I did my 8th class and went to Jammu for further schooling. From Jammu I went to Srinagar and could go to the village for another year and a half. I was now 15 and have failed in the 9th class. When I went home during the vacations and met Rahim Bibi, she asked, Bauji, in what class are you studying now? اب کہتا ہے 3 سال تک کیا ہوا, ایسا ہی ہوا کہ میں جاتا رہا اسکول اور وہ وہاں سے نکلتی رہی, لیکن 3 سال تک اس نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا جب تک میں نے 8th کلاس پاس کر لیا اور میں جموں چلا گیا فردر پڑھنے کے لیے. اور کیا ہو گیا کہ جموں میں فیل ہو گیا 9th کلاس میں. اب کچھ ٹائم کے بعد جب میری چھٹیاں پڑ گئی تو میں پھر سے اپنے گاؤں واپس آیا. تو رحیم بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کس کلاس میں ہو؟ میں نے کہا 9th میں. اس نے کہا وہاں سے, لاسٹ ایئر آلسو یو ویر ان the 9th. I felt at a loss of words and could not bear a stand in front of her and moved away mumbling yes. کہتا ہے اس نے مجھے کہا تم تو پچھلے سال بھی 9th کلاس میں تھے. اب مجھے شرم آ گئی اور میں وہاں سے گیا اور میں نے کہا ہاں میں پچھلے سال بھی 9th میں تھا. As ill luck would have it, I failed in the 9th second time and did not go home for a whole year. After 3 years in 9th, I got promoted to the 10th and then went home. I came across Rahim Bibi again and she said, now you must be in the college. اب کہتا ہے میرا اتنا برا لگ تھا کہ میں جب نیکسٹ ٹائم کیا ہو گیا, میں 2 بار پھر سے 9th میں فیل ہو گیا. اور اس کے بعد 3 سال کے بعد میں نے 9th پاس کیا اور میں 10th میں پہنچا. اس کے بعد میں گھر چلا گیا. ان 3 سالوں میں گھر نہیں گیا. تو رحیم بیوی نے مجھے کہا تم تو اب کالج میں ہوں گے. نو بابی, I am in the 10th now. I will pass this time and will get a job. I shall arrange for your mashani from my first pay. اور کہتا ہے میں نے اس کو کہا نہیں بابی, ابھی میں 10th میں ہوں, اب جو میں پاس ہو جاؤں گا میں پھر جاب کروں گا اور میں اپنے آپ کے لیے منہ دکھائی ضرور میں پے کروں گا. تو آج کی ویڈیو میں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم اس کا نیکسٹ پارٹ ڈسکس کریں گے. اب یہاں پہ کچھ میں نے ورڈس لکھے ہیں, جیسے پکچر ہے, سوان ہے, پیکاک ہے, چورز ہے, پریز ہے, الک ہے. ان ورڈس کی میں نے میننگ ڈالی ہوئی ہے, آپ ان پہ سینٹینسز بنائیں گے. ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.